নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত কি আপোনালোকে অলৰেডি থাম্বনেইল চালে আৰু টাইটেলও দি থোৱা আছে সেইভাগে আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো অনলি অন আপুনি যি ডিফেন্স লভাৰ বা আৰ্মি লভাৰ বা আপুনি যদি ভাবি থৈছে যে পুলিচত যাম বা আৰ্মিত যাম তেন্তে আপুনি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু আপুনি যদি চাই আছে সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. 14 জুনত উলিয়াইছিলে এটা নতুন আঁচনি যি আঁচনিৰ নাম দিয়া হৈছিল অগ্নিপথ আৰু অগ্নিপথ কি হ'ব অগ্নিবীৰসকলৰ ৰিক্ৰুইট কৰা হ'ব অগ্নিবীৰসকলৰ ৰিক্ৰুইট কৰি ক'ত দিব কি কৰিব সেই বিষয়ে মানে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল তাত আৰু যেতিয়া ভৰ্তি হওঁতে কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে তাত নিযুক্তি পাব সেইটোক লৈ পিনে এটা বহুত ডাঙৰ টেনশ্যন আছিলে আৰু সেইটো ওলাওঁতে মানে ধৰক দেশখনত কিবা উল্টা মানে কি দুদিন পিছতে হাংগামা হৈ গ'ল গোটেই বহিৰাজ্যত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে বহু মানে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ঘৰ আৰু যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতাসকল মিনিষ্টাৰসকলৰ সেইবিলাকক মানে বহুত ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছিলে জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে বেলেগে নহয় কোনো শত্ৰুপক্ষ নহয় কৰিছিলে আমাৰ জনসাধাৰণে এতিয়া এই আঁচনি লৈ পিনে কিয় তেনেকৈ কৰিছে আৰু কি কাৰণে কৰিছে সেই বিষয়ে আপোনালোক ক'বলৈ গৈছোঁ এই বিষয়ে ভালকৈ আলোচনা হ'বলৈ পাওঁতে দেশত ওলালে এটা বহুত ডাঙৰ আন্দোলন আৰু এই আন্দোলন কিয় কাৰণে হৈছিলে কি কাৰণে হৈছিলে সেই বিষয়ে কৈ আছোঁ এই আন্দোলন হৈছিলে এই কাৰণে যে অগ্নিপথ যিটো আঁচনি উলিয়াইছে যিটো আঁচনিৰ অধীনত আপুনি এজন সৈনিক হ'ব পাৰিব সৈনিক হৈ পিনে দেশৰ সেৱা কৰিব পাৰিব সেইসকল যিসকল মানে ধৰক আপকামিং জেনেৰেশ্যন যিসকলে মানে ডিফেন্স লভাৰ বা আৰ্মি লভাৰ কৈছিলোঁ যে সেই আৰ্মি লভাৰসকলে ভাবিছে যে আমাক 4 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিব কিয়নো বাকী সৈনিকসকল যিসকল ইয়াৰ আগতে ৰিক্ৰুইট হৈছিলে চ' সেইসকলক যেতিয়া 18 বছৰ বা তেনেকৈ মানে ৰেংক লৈ পিনি মানে ভাল পজিশ্যনলৈকে বা বয়স এজ লিমিট আছিলে চ' ইমান বছৰলৈকে কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু এতিয়া অগ্নিবীৰ ওলাইছে আৰু অগ্নিবীৰত ওলোৱাৰ পিছত অগ্নিবীৰৰ ৰিক্ৰুইট কৰিব অনলি অন 4 years কাৰণে 4 years কাৰণে তাৰ চেলাৰী বেচিছ হ'ব 30,000 পৰা 40,000 ভিতৰত হ'ব 4 বছৰত ষ্টাৰ্টিং 30,000 পৰা হ'ব আৰু 4 বছৰৰ পিছত মানে কিয় চৰকাৰে সেইসকলক অগ্নিবীৰসকলক তাৰ ভিতৰত মানে 25% মই শুনামতে মানে আৰু শুনামতে 25% যিসকল অগ্নিবীৰ আছে অগ্নিবীৰসকল আকৌ নতুনকৈ বেলেগ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ৰিক্ৰুইট কৰা হ'ব আৰু 75% বেকাৰ হৈ যাব বেকাৰ হৈ যোৱাৰ লগতে সেইসকলক বা যিসকল তাৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড লৈ আহিব চ' ৰিটায়াৰ্ড লৈ অহাৰসকলক হাতত দিব 10 পৰা 12 লাখ টকা তেখেতসকলক দিয়া হ'ব এখন প্ৰশংসা পত্ৰ আৰু যি প্ৰশংসা পত্ৰৰ সহায়ত সেই জোৱানসকলে তেখেতসকলে সেই চাৰ্টিফিকেট দেখাই অন্য বহুত ধৰণৰ কোম্পানী চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বা বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বেংকৰ পৰা এনে ধৰণৰ বহুত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত তেখেতে সেই চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে নতুনকৈ আকৌ পাব পাৰে এটা চাকৰি আৰু সেই নিযুক্তিৰ ফলত তেখেতৰ মানে সমস্যা কিছুমান সমাধান নহ'লেও মানে এটলিষ্ট মানে যিসকলে যে ৰিটায়াৰ্ড লৈ আহিব তাৰপিছত বেকাৰ হ'ব কাৰণ 10 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে আৰু 23 বছৰলৈকে বঢ়াই দিয়াৰ পিছত বাকীতে তাৰ 4 বছৰ কৰাৰ পিছত মানে বহুত আধা এইজতে কি হ'ব বহুত মানুহ আনএমপ্লয়েড হৈ যাব চ' আনএমপ্লয়েড হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে ভাবিলে এইখন প্ৰশংসা পত্ৰ দিয়া হ'ব প্ৰশংসা পত্ৰৰ জৰিয়তে আনএমপ্লয়েড হোৱাতকৈ নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰক বা নিজৰ কেৰিয়াৰ লগত ফ'কাছ কৰিবৰ বাবে এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব যাৰ ফলত তেখেতে বেলেগ কোম্পানীসমূহত চাকৰি নিযুক্তি পাব অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে মানে এতিয়া হ'ব মানে প্ৰতি বছৰে ওলাব এইবাৰ আগতে ওলাই 2 বছৰ বা 3 বছৰৰ মূৰে প্ৰতি ওলাই থাকে যে ইমান হাজাৰ সৈনিক লোৱা হ'ব ইমান হাজাৰ সৈনিক লোৱা হ'ব সেই বুলি নহয় এইবাৰ ওলাব প্ৰতি বছৰে ওলাব 46,000 মানে পোষ্ট ওলাব আৰু পোষ্ট লোৱাৰ পিছত সেইসকলক দিয়া হ'ব ভাৰতীয় সৈনিকসকলক দিয়া হ'ব সেইসকলক স্পেচিয়েলি ৰিক্ৰুইট কৰা হ'ব যেনে কাশ্মীৰ তাৰপৰা জম্মু কাশ্মীৰ লেহ লাডাখ তেনেকুৱা অঞ্চলত দিয়া হ'ব তেনে আঁচনি আপুনি যদি জইন কৰিব বিচাৰে আপুনি জইন কৰিবলৈ হ'লে সাধাৰণভাৱে নহয় যিভাৱে মানে বাকী সৈনিকসকলে নিযুক্তি পায় বা ইণ্টাৰভিউ কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত কিন্তু মানে টেষ্ট দিব লগা হয় ফিজিকেল টেষ্ট দিব লাগে ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগে মেডিকেল টেষ্ট দিব লাগে সেম প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি নিযুক্তি পাব পাৰে এপ্লাই কৰক আৰু এপ্লাই কৰি আপুনি বনক এজন অগ্নিবীৰ আৰু অগ্নিবীৰ হৈ পিনি দেশৰ সেৱা কৰাত আপোনাৰ যোগদান আৰু অগ্নিবীৰৰ মানে চাইড এফেক্ট মানে যিসকলক লৈ পিনি যিটো হেৰিত লৈ পিনি মানে বিতৰ্ক চলিছে চ' বিতৰ্ক হোৱা মোৰ ফালৰ পৰা এটা মানে জেনুইন কাৰণ কৈছোঁ সেইটো কাৰণ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে মাজবি মোৰ ফালৰ পৰা যেন সেইটোৱে লাগিছে কাৰণ কিয়নো আমাৰ কিমান 2000 চনৰ পৰা 2000 নে 2005 চনৰ পৰা এটা চৰকাৰে এটা নতুন নীতি আৰম্ভ কৰিছিলে যিটো নীতি অধীনত 5 চনৰ পিছৰ পৰা যিসকলে চাকৰি নিযুক্তি পাব সেইসকলক দিয়া নহয় পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা চ' এইটো আঁচনিক লৈ পিনি মানে এটা বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে এটা বিতৰ্ক চলি আছে ইমান 2005 চনৰ পৰা আজিলৈকে চ' এতিয়া কৈছোঁ মূল কথাটোত
কাৰণ অগ্নিবীৰসকলে সোমাব 4 বছৰৰ কাৰণে আৰু 4 বছৰত বাকী সৈনিকসকলে যি ধৰণে পায় কি থাকিব চেন থাকিব বাকী কেণ্টিনৰ সেৱা আৰু তেনে বহুত ধৰণৰ যিবিলাক ফেচিলিটি বাকী সৈনিকসকলে পায় কিন্তু অগ্নিবীৰসকলে সেইখিনি ফেচিলিটি নাপায় কাৰণ অগ্নিবীৰসকলৰ যি PF থাকিব সেই PF-ৰ পৰা 30,000 যি ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী বা 40,000 লৈকে হ'বগে তাৰ পৰা কিছু সংখ্যক কাটি ৰাখিব যিটো PF লাষ্টত দিব 10ৰ পৰা 12 লাখ টকা তাত মেনশ্যন কৰি দিয়া হ'ব এই বিষয়ে আৰু অগ্নিবীৰসকলক মানে এতিয়া মেইন উদ্দেশ্য যিটো মানে বিতৰ্ক তথ্য আছে বিতৰ্ক তথ্যৰ মেইন মূল কথাটো কৈছো বিতৰ্ক তথ্য এইটো কাৰণে হ'ব পাৰে কিয়নো পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাপায় অগ্নিবীৰসকলৰ মানে এইটো তাৰ পিছত মই কৈছিল অলপ আগত যিসকলে পুৰা সম্পূৰ্ণভাৱে কি হ'ব নিকৰ্ম হৈ যাব বা তেখেত হেৰিব আৰু এই সংগঠনক লৈ পিনে মানে বেলেগ বেলেগ কিছুমান দেশত মানে এনেকুৱা হৈছিল যে কি দেশক চাৰ্ভিছ দিয়াৰ পিছত তেখেতসকল ভাল মানে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং লৈ পিনে এজন সৈনিক হৈছে আৰু সৈনিক হোৱাৰ পিছত তেখেতসকল তাত কাম কৰি যিখিনি টকা পালে সেই পইচাৰে সেই কামখিনি শিকি মেলি আহি পিনে পিছত তেখেতসকলে গৈ পিনে আকৌ বেলেগ ধৰণৰ টেৰৰিজম যেনেকা ধৰক আলফা হেৰি বহুত ধৰণৰ হেৰি আছে চ' সেইবিলাকৰ লগত যোগদান কৰিলে জানো দেশৰ কাৰণে সৈনিক তৈয়াৰী কৰিছে নে শত্ৰু তৈয়াৰী কৰিব সেইটো এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় যে কিছুমান নীতি লৈছে সেই নীতিসমূহ বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি লৈছে নিশ্চয় মই যিটো ভাবিছো মোৰ হাতে নহ'বও পাৰে চ' ইয়াতকৈ বেলেগ বিষয় বেলেগ ভাল কথা ভাবিব পাৰে ভাল চিন্তাৰে তেখেত চৰকাৰে আগবাঢ়িছে চ' আগবাঢ়ি যিসকল অগ্নিবীৰত জইন কৰিব মোৰ ফালৰ গ্ৰেণ্ড চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই এটা জাষ্ট মোৰ অপিনিয়নটো দিছো আনএমপ্লয় হৈ থকাতকৈ এটলিষ্ট মানে অগ্নিবীৰত এবাৰ চেষ্টা কৰক যদি পাই যায় দেন অগ্নিবীৰ ইজ দ্য বেষ্ট কাৰণ আপুনি 4 বছৰ দেশক সেৱা কৰিব পাৰিলে 10 লাখৰ পৰা 12 লাখ টকা যি পাব সেই আপুনি নতুন নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰক না আজিকালি পইচাবোৰ আপুনি লোন ল'ব লগা ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে তাতে কৰিব নালাগে জাষ্ট আপুনি দেশক সেৱা কৰক চাকৰিত কোৱালিফাই হৈ পিনে এপইণ্টমেণ্ট লওক চাকৰি কৰক চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট লওক 12 লাখ টকা পাব 10 বা 12 লাখ টকা সেই টকাৰে নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু লোন ল'ব নালাগে তাৰ পইচা কোনো চৰকাৰ ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু যিখিনি টকা দিব সেইখিনি আপোনাৰ টেক্স ফ্ৰী হ'ব টোটেলি আৰু টেক্স ফ্ৰী হোৱাৰ লগতে ইমানখিনি ভাল তথ্য আৰু এই বিষয়ে মই যিমানখিনি কম বাৰু যিমানখিনি কৰিম আপোনাক বুজাম বুলি ভাবিছো চ' মোৰ কিছুমান খেলি মেলি হৈছে চ' মই চাওঁ এটা চেনেল যিটো চেনেল মই বহুত ফ'ল' কৰোঁ যিটো ইউটিউবত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে শ্ব'জ বুলি আৰু শ্ব'জ চেনেলটোৰ অ'নাৰ হৈছে মোহন মংগত আৰু মোহন মংগতে এই বিষয়ে বহুত ভালকৈ বুজাইছে আৰু বহুত ভালকৈ কৈছে চ' মই তেখেতক ফ'ল' কৰোঁ তেখেতৰ চেনেলটো মই আৰু লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত যে আপুনি যদি ভাল পায় তেন্তে তেখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু মোহন মংগতে বহুত ভাল ধৰণে এক্সপ্লেইন কৰিছে এই বিষয়ে हम इन दोनों आर्गुमेंट्स के बीच कैसे डिबेट को सॉल्व कर सकते हैं लोग प्रदर्शन बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि सरकार का कर्तव्य है उनको एक जॉब दिलाना एक ऐसी जॉब जिसमें पेंशन भी हो और दूसरे बेनिफिट्स भी हो अब क्या किसी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली किसी सिटीजन को जॉब दे नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऐसे देश में जहां सरकार पूरी तरह कंट्रोल करती है इकोनॉमी को जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि वो अपने सिटीजन्स को एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्राइवेट जॉब्स के जरिए अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार तो ऐसा कर रही है अगर आप डेटा देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो एवरेज सैलरीज हैं वो करीब 5.5 लाख रुपए देती है जबकि एवरेज गवर्नमेंट सैलरी 2.5 लाख पर इश्यू ये है कि इंडिया के मोस्ट लोगों को ऐसी प्राइवेट नौकरियां मिलती नहीं है ये नौकरियां उन लोगों के लिए जो बहुत प्रिविलेज फैमिली से जो अच्छे स्कूल्स में गए थे जो अच्छे कॉलेजेस में गए थे मेरी तरह पर दूसरे लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद करीब 90% प्राइवेट जॉब जो इंडिया में क्रिएट हुई हैं वो इनफॉर्मल रही हैं इनफॉर्मल जॉब्स का मतलब है कि उन जॉब्स में ना तो कोई पेंशन है और ना कोई दूसरे बेनिफिट्स जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मान लीजिए और यही मेन प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की कि कई प्राइवेट सेक्टर जॉब्स तो हैं पर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में लोग कहाँ भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ पर उधर भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में गिरावट आई है क्योंकि सरकार ने अपना कंट्रोल कम कर दिया है इकोनॉमी पर इसी की वजह से हमें ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है जहां 370 पियोन पोजीशंस के लिए 50 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर सेक्रेटेरिएट में एक वेटर की पोजीशन के लिए जहां 11 सीटें हैं 7,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट जॉब्स भी कम हो रही हैं नौजवान लोग सोच रहे कि ना तो हम घर के रहे और ना घाट के पर क्या इस चीज का मतलब है कि सरकार को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं सरकार को जरूर रिफॉर्म करना चाहिए हम सब जानते हैं कि कई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन हेल्थ और पुलिस जो बहुत ही बेकार है हम में से कौन खुश होगा इंडिया में एजुकेशन हेल्थ या फिर पुलिस से और इसके पीछे एक कारण है कि इंडिया में इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ही नहीं जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके जैसे एक उदाहरण लीजिए दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया की पुलिस फोर्स पर कैपिटा बेसिस पर बहुत अंडरस्टाफ्ड है अब सरकार और पुलिस ऑफिसर्स या फिर हेल्थ कर्मचारी हायर क्यों नहीं करती क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है इंडियन
इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स की लायबिलिटीज कई सालों से बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकारों को क्या करना चाहिए? प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा था कि स्टेट्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोगों को हायर करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर उनको अपनी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करनी है। तो इस पूरे मुद्दे की ये मेन प्रॉब्लम है कि इंडियन यंगस्टर्स को अच्छी जॉब चाहिए, वही इंडियन गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत भी है। पर इस स्कीम में कई और प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में लोगों ने बात करी है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस स्कीम से नौजवान लोगों को 4 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और हो सकता है कि उन 4 सालों के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाए और हमारी सोसाइटी को उल्टा नुकसान दिलाए। हो सकता है कि अपनी 4 साल की ड्यूटी के बाद ये यंग सोल्जर्स इलीगल क्राइम्स करना स्टार्ट कर दे और मर्सनरीज बन जाए। मर्सनरीज मतलब वो लोग जो दूसरे देशों में पैसे के लिए फाइट करते हैं। जैसे कई सीरियन रिटायर्ड सोल्जर्स रशिया, यूक्रेन, लिबिया और अजरबैजान जैसे देशों में मर्सनरीज की तरह काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश में कई क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इनफैक्ट रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स होते हैं। एक और उदाहरण है शाहबेग सिंह का, जो एक कमीशन इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेन भी किया था, पर उनकी रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। आपको पता है कि उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? 1984 में उन्होंने कई खालिस्तानी सोल्जर्स को ट्रेन किया इंडियन आर्मी को एक सबक सिखाने के लिए। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जो एंटी सोशल बन जाए, पर क्या हमारे पास कोई एविडेंस है कि ढेरों लोग क्रिमिनल बन जाएंगे इस ट्रेनिंग के बाद? कोई हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं इस बात का। ऐसे कई और दूसरे देश हैं जैसे इजराइल जिन्होंने ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे अपनी मिलिट्री में। क्या वो लोग क्रिमिनल बन गए? पर हो सकता है कि इजराइल जैसे अमीर देशों में ऐसा ना हो, पर इंडिया या फिर सीरिया जहां गरीबी है और जहां एक जॉब मिलना मुश्किल है ऐसा हो सकता है। पर हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए। कई रिटायर्ड सोल्जर्स ने यह भी कहा है कि एक अच्छे सोल्जर बनाने के लिए कम से कम 7-8 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। 4 साल में क्या होगा? रिटायर्ड जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि हिमालय जैसे रीजन में फाइट करना इतना आसान नहीं है। एक और रिटायर्ड जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल गलवान में फाइटिंग जो थी वो बहुत अनोखी थी। चाइनीज सोल्जर्स ने अलग अलग वेपन से हमला किया और इंडियन सोल्जर्स उनको काउंटर अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही कर पाए थे। क्या अग्निवीर ये चीज कर पाएंगे? अब इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जरूरी नहीं है कि इन अग्निवीर को कॉम्बैट रोल्स ही दिए जाए। किसी भी मिलिट्री में कई डिफरेंट तरीके की जॉब्स होती है। इंडियन आर्मी में 150 से ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां डे टू डे एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया या साफ सफाई हो गई। फिर एक और क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है कि स्कीम की वजह से सोल्जर्स का मोटिवेशन कम हो जाएगा। करीब 150 सालों से इंडियन फोर्सेस कास्ट, क्लास और अपनी सोशल आइडेंटिटीज के बेसिस पर डिवाइड की गई है। मिलिट्री ने आर्ग्यू किया है कि ऐसी बटालियंस सोल्जर्स को यूनाइटेड रखती हैं क्योंकि अपनी इंडियन आइडेंटिटी के अलावा उनके पास एक और कॉमन आइडेंटिटी होती है। पर अग्निपथ स्कीम के अंडर ऐसा नहीं होगा। लोग अपनी सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि सब एक साथ काम करेंगे। अब इस चीज के बारे में काउंटर ये किया जा सकता है कि क्या जरूरी है सोशल आइडेंटिटीज का होना किसी भी बटालियन या फिर रेजिमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए? मे बी कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे कोई रेजिमेंट या फिर बटालियन यूनाइटेड रहे, इसके बावजूद कि वो डिफरेंट कास्ट से हैं या फिर डिफरेंट क्लास से हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर क्रिटिसिज्म का एक सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, इसलिए ये क्लियर है नहीं कि ये स्कीम इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। मोहन मगत কথা বিষয়ে আপুনি ভাল পালে দেখে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনাক বুজাব পাৰিলে এটলিষ্ট কিবা হেৰিত যদি কিবা খেলি মেলি হৈছে দেন হেৰি হৈছে তো মোক ক্ষমা কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন ভিডিঅ' আহি আহিব প্ৰতি সপ্তাহত 2টাকৈ। বেলেগেও যে আপোনাৰ ফেমিলি বা ফ্ৰেণ্ডছত যে কোনোবাই যে এই বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা এই বিষয়ে যে কিবা কনফিউজন আছে তেখেতক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো নাপাহৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে সেই বিষয়ে জনাবলৈ আপুনি নাপাহৰিব। আপোনাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি পিনি আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে দেন লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন তেনেকৈ কি কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।